Hello, my dear students. So once again, you are welcome at your own channel, Hindi or Ritus Vidyarthi. So in the last video, we learnt about the short summary. So my student said that, ma'am, please explain page by page. You know, I'm very good in English. So please try to understand. So here I'm giving you the page by page explanation. And if you think I'm wrong somewhere, you can correct. You can do comment. You can do comment and then I will get to know. And if you like this, please like it. Share it with your friends so that they will be also benefited. And subscribe my channel if you are here for the first time. So let's start today's lesson, that is Sandehe, written by Jaishankar Prasad. So this is the story. So as I told in my previous video, Ram Nihal is going to meet Manoरमा. तो राम निहाल अपना बिखरा हुआ सामान बांधने में लगा. He was packing his bags, बिखरा scattered सामान बांधने में लगा. जंगले में धूप आकर उसके छोटे से शीशे पर तड़प रही थी. Means, see, Jaishankar Prasad is a writer of somewhere nature. He loves his country. So all these things can be seen in his literary work. So he's giving all the similes that now sun is shining bright. तो अपना उज्जवल आलोक खंड, his shining face, छोटा सा दर्पण बुद्ध की सुंदर प्रतिमा को अर्पण कर रहा था. So he was looking at Buddha's statue. सुंदर प्रतिमा is statue. किंतु प्रतिमा ध्यान मग्न थी. परंतु जो प्रतिमा थी, जो स्टेचू था, वो तो अपने में ही ध्यान मग्न था. He was meditating, means Buddha was meditating. उसकी आंखें धूप से चौंधियाती ना थी. His eyes were not distracting by the sun rays. प्रतिमा का शांत गंभीर मुख और भी प्रसन्न हो रहा था. When the sun rays were there on the face of that statue, his face was glowing. Pratima's means statue's face was glowing. किंतु राम निहाल उधर देखता ना था. But Ram Nihal was not giving that place any kind of. Ram Nihal was not giving any kind of attention to that. उसके हाथों में था कागजों का एक बंडल. He was having a pile of papers, which I told you that he was having the letters written by Manorama to Ram Nihal. जिसे संदूक में रखने से पहले, संदूक is a box, वह खोलना चाहता था. पढ़ने की इच्छा थी. He wanted to read, but he was hesitating. हिचक रहा था, hesitating. और अपने को मना रहा था. He was just telling himself, जैसे किसी भयानक वस्तु से बचने के लिए कोई बालक को रोकता है. That someone stops you, that you are not. Someone gives you that, no, you are not supposed to do this, like that. So he was not, he was confused. Right? You know that Sunday, so he was confused whether to open it or not to. बंडल तो रख दिया, पर दूसरा बड़ा सा लिफाफा खोल ही डाला. So he was having envelope. एक चित्र उसके हाथों में था और आंखों में आंसू थे. He kept that pile of papers, but that he was having envelope. So in that envelope there was a picture. कमरे में अब 2 प्रतिमाएं थी. Now there were 2 statues. बुद्धदेव, गौतम बुद्धा अपनी विराग महिमा में निमग्न. Nimang means he was totally indulged. Gautam Buddha was in his all the meditation and all. Our Ram Nihal is now Ram Nihal is being treated by a simile. So he was like कि Ram Nihal राग शैल सा अचल, means he was not having any kind of feeling जिसमें से हृदय का द्रव्य आंसुओं की निर्झरी बनकर बह रहा, धीरे धीरे बह. So his eyes were not crying too much. He was not crying too much, but his heart was crying like a river. निर्झरिणी means नदी बनकर बह रहा था, first flowing. He's
heart was full of emotion and it was flowing. किशोरी ने आकर हल्ला मचा दिया, भाभी, अरे भाभी, देखा नहीं तूने ना, निहाल बाबू रो रहे हैं, अरे तू चल भी, तू चल भी means now she is, now there is another character, Kishori, so she is sister-in-law of Shama, so Shama is landlady of Ramniha, so she called him loudly and then Shama enters suddenly and Visimritsa means he was somewhere lost, so he was a little crying motions and all that. श्यामा ने कहा, निहाल बाबू, निहाल ने आंखें खोलकर कहा, क्या है, अरे मुझे क्षमा कीजिए. अचानक ही feel that no, this is Shyama, so I must control my feelings. And then he started wiping off his tears. आंसू पोंछने लगा. बात क्या है, कुछ सुनो भी, तुम क्यों जाने के समय ऐसे दुखी हो रहे हो, क्या हम लोगों से कुछ अपराध हुआ है? What is the reason that why are you living like this? I want to listen. Let me know also. तुम जाने के समय, why are you so sad when you are leaving? दुखी means sad. Have we done any kind of guilty? Have we done anything wrong? Let's move to our next page that says तुमसे अपराध होगा. No, 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 no. You cannot do any kind of mistakes and all. तो इट वॉज ऑल माई फॉल्ट, इसमें मेरी ही भूल है, प्रायश्चित करने का यह ढंग नहीं, यह मैं धीरे धीरे समझ रहा हूँ, किंतु करूं क्या, यह मन नहीं मानता. ही इज फीलिंग गिल्टी दैट आई वांट टू, ही वाज फीलिंग बैड, so he is confused. In short, श्यामा got alert. श्यामा सावधान हो गई. उसने पीछे फिर कर देखा कि किशोरी खड़ी हुई है. That her sister-in-law is standing there. So she was a smart and intelligent lady. She knows how to take action and at what time, what kind of action will be taken at what time. So she says, जा बेटी, कपड़े धूप में फैले हैं, वहीं बैठ. So she is saying that you go and sit in the sun because clothes are there. किशोरी went off. किशोरी चली गई. अब जैसे सुनने के लिए प्रस्तुत होकर श्यामा एक चटाई, she pulls a mat and sits with in front of रामनिहाल. So उसके सामने छोटी सी बुद्ध प्रतिमा सागवान की सुंदर मेज पर धूप के प्रतिबिंब में हंस रही थी. तो she also saw that statue and all. So here statue is like Ramnihal. Ramnihal is also in, Ramnihal is also crying and all that. So Ramnihal started saying, Shyama, you are very hard. You are widow also. So you have some respect. You have all the respect, not some, I'm sorry for that. That you have all the respect from me. That now I got to know that how a person can stop running behind his own wishes. वासनाओं का दमन करता है किंतु अवलंब, but your base is very strong. तुम्हारे सामने बालकों का झुंड हंसता खेलता लड़ता झगड़ता है, और तुमने जैसे बहुत सी देव प्रतिमाएं श्रृंगार से सजाकर हृदय की कोठरी को मंदिर बना दिया, किंतु मुझको वह कहाँ मिलता. मीन्स इन अदर वर्ड्स he is saying that although you are a widow, you are having all the good feeling, you don't rush for your wishes, but it's not mine. भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों में छोटा मोटा व्यवसाय, नौकरी और पेट पालने की सुविधाओं को खोजता हुआ जब तुम्हारे घर में आया तो विश्वास हुआ कि मैंने घर पाया. So I told you in the story also that he has come from a small city to a big city for looking like for his livelihood, and he wanted to do some kind of job, some kind of business. So he went, when he got Shyama's house, then he got to know that this is my house. मैंने घर पाया. I got the house. मैं जब से संसार को जानने लगा तभी से मैं गृहहीन था. I was houseless. I did not have any kind of house when I started understanding the world. मेरा संदूक और ये थोड़ा सा सामान जो मेरा उत्तराधिकार का अंश था अपनी पीठ पर लादे हुए घूमता हूँ, ठीक उसी तरह जैसे कंजर अपनी गृहस्थी टट्टू पर लादे हुए घूमता है. Means I am like a person who does not, I am homeless, so I don't have much responsibility. मेरा उत्तराधिकार means उत्तराधिकार का
उत्तराधिकार मीन्स कि जो मेरा जो कुछ मेरी बिलोंगिंग्स हैं वो सभी एक छोटा सा संदूक है और थोड़ा सा सामान है और मैं उसे आई टेक इट एट माई बैक। मैं चतुर था इतना जितना कि मनुष्य को नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया कि मनुष्य अधिक चतुर बनकर अपने को अभागा बना लेता है और भगवान की दया से वंचित हो जाता है। आई वॉज टू क्लेवर दैट अ मैन शुड नॉट बी, अ ह्यूमन शुड नॉट बी, because now I get to know that if a human is clever, then he does not have any kind of good kismat, good faith. So, and God is also not there to have mercy on us. दया से वंचित हो जाता है. God also does not have mercy on us. So difficult words are, difficult meanings are given here. So you can take reference from here also. Now let's move to next page. I'm running because I don't want to make this video long so that you will get bored. But I know you are not getting. So मेरी जो महत्वाकांक्षा means कि जो मेरी high kind of what we can say, let's see the meaning of महत्वाकांक्षा. Sometimes I also forget. महत्वाकांक्षा means जो मेरी big बनने की इच्छा, बड़ा बनने की इच्छा थी, तो मुझे बराबर दौड़ाते रहे. मैं अपनी कुशलता से अपने भाग्य को धोखा देता रहा. यह भी मेरा पेट भर देता था. कभी कभी मुझे ऐसा मालूम होता कि यह दांव बैठा कि मैं अपने आप पर विजयी हुआ और मैं सुखी होकर, संतुष्ट होकर चैन से संसार के एक कोने में बैठ जाऊंगा. किंतु वह मृग मारीचिका थी. मृग मारीचिका मीन देन वी सी दैट hiran, deer is running behind water. So it is mrig marichika. He says that, oh fine, water is there, so I must go to that place. Then there is no water. Then he says, okay, fine. All this happen in sandy areas. रेगिस्तान में होता है ये सब. So it was happening with Ram Nihal also, that he was running and running. Okay, fine. I've reached this goal. No, he was not stopping. He was running and all. मैं तब तक जिनके यहाँ नौकरी करता रहा, वे लोग बड़े ही सुशिक्षित और सज्जन हैं. मुझे मानते भी बहुत हैं. तुम्हारे यहाँ घर का सा सुख है, किंतु यह सब मुझे छोड़ना पड़ेगा ही. इतनी बात कहकर रामने, आई वॉज वर्किंग विद समवन, रामनिहाल इज सेइंग दैट I was working with someone, they are very well educated or they are very kind enough. And I'm staying at your house, I'm feeling like house, but I have to leave on. So now Shama was getting irritated because he was telling a long story, as I am telling you a long story. But you have to understand the chapter. तो तुम काम की एक बात ना कहोगे, व्यर्थ ही इतनी. Now she is getting irritated. You are not coming to the point. You are not coming to the point. You are just cooking stories. व्यर्थ ही इतनी means you are just in ways you are cooking all the story. श्यामा और कुछ कहना चाहती थी कि उसे रोककर रामनिहाल कहने लगा. श्यामा wanted to complete her sentence. As you can see that 4 dots are given. But he stopped Shama and said, मैं तुमको अपना शुभचिंतक, वेल विशर, फ्रेंड और सेवियर मान समझता हूँ. फिर तुमसे ना कहूंगा तो यह भार कब तक ढोता रहूंगा. If I will not share my things with you, I can't take this burden so long. यह चैत है, चैत और ये जो है, सॉरी. So these are the names, चैत, पौष, ये सब जो हैं एक महीने के नाम है जो हिंदी महीने होते हैं. तो दिस इज व्हाट ही इज सेइंग नाउ कि यह चैत है ना, कार्तिक की पूर्णिमा थी. मीन्स नाउ ही इज टेकिंग श्यामा टू पास्ट. मैं कामकाज से छुट्टी पाकर संध्या की शोभा देखने के लिए दशाश्वमेध घाट पर जाने के लिए तैयार था. तो Brij Kishore Babu, I think he was working with Brij Kishore, not Brij, it's Braj Kishore. So he said it was full moon month and I was in happy mood and I wanted to enjoy the beautiful evening. So Braj Kishore Babu called me and said, तुम तो गंगा किनारे टहलने जाते ही हो, you go to river side, गंगा river side. आज मेरे एक संबंधी आ गए हैं, इन्हें भी एक बजरे पर बैठाकर घुमाते आओ, मुझे आज छुट्टी नहीं. बजरे is boat, bajare. So he is Braj Kishore Babu is saying that you go to river, Ganga river for your walk, evening walk. So I don't have off today, so you take, some of my relatives have come, so you take them.
अब मैंने स्वीकार कर लिया, आई एक्सेप्टेड इट। राम निहाल इज कंटिन्यूइंग। मैंने स्वीकार कर लिया, ऑफिस में बैठा रहा, ही वाज सिटिंग इन हिज ऑफिस। थोड़ी देर में भीतर से एक पुरुष के साथ एक सुंदर स्त्री निकली। इन सम टाइम ही सॉ दैट देयर वाज अ ब्यूटीफुल लेडी विद अ मैन। मैं समझ गया कि मुझे इन्हीं लोगों के साथ जाना होगा, एंड ही सेड दैट फाइन, आई अंडरस्टूड दैट आई हैव टू गो विद देम। ब्रज किशोर, मंदिर, मान मंदिर घाट पर बजरा ठीक है। निहाल आपके साथ जा रहे हैं, कोई असुविधा ना होगी, इस समय मुझे क्षमा कीजिए, आवश्यक काम है। तो ब्रज किशोर बाबू इज सेइंग ऑल दिस टू हिज रिलेटिव्स। मान मंदिर इज द नेम ऑफ अ घाट, बजरा मीन्स बड़ी नाव। तो Nihal, this our hero is going with them. There will be no asuvida, there will be no problem. So this time, please excuse me. There is some important work, so I have to complete my work, and then I'm sorry for this. And I think I must stop this video here so that you will understand this, and later I will make the rest of the video. Please let me know if you have any kind of situation, and please excuse me. मुझे क्षमा कीजिएगा अगर कोई गलती हो गई। And if you like it, please subscribe. Bye.